Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing current affairs for the 11th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. And if you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. In this video students, we will be talking about G. Kishan Reddy, who has launched the aspirational DMF program. Then Union Minister H.D. Kumaraswamy has inaugurated the new office of MSTC in New Delhi. Then Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has added 7 new agriculture products to the eNAM platform. And DEPWD, they have launched new portal for the disability welfare scheme. All these things and many more will be discussed here. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. So do watch these videos. They are quite beneficial for competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Punjab leads in Parakh Rashtriya Sarvekshan 2024. What is this Parakh? Parakh stands for Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. This is a comprehensive learning assessment, and here which state it is? Punjab state that has emerged as the best performing state in India, achieving the highest score across class 3rd, 6th and 9th. Right, if we see the foundational stage students, let me show you. Class 3rd, it is the foundational stage and assessed in language, mathematics and world around us in 90 minutes test. Then for class 6, preparatory stage. For class 9th, middle stage. And we have seen for all of them, Punjab emerged as the best performing state here. Then one more thing, remember, you can see class 3rd, Punjab best performer. For class 6th, Punjab and Kerala best performer. And for class 9th also, Punjab the best performer. Then this assessment based on which all these performance was launched, this assessment was conducted by whom? This is the next question. It is conducted by NCERT, National Council of Educational Research and Training, that is an autonomous institution under the Ministry of Education. Correct? Take a note of all these things students. Next is Union Minister G. Kishan Reddy has launched aspirational DMF program. What is this DMF stands for? It is your District Mineral Foundation. Correct? So this aspirational District Mineral Foundation program was launched. It was launched during the National DMF workshop that was held in New Delhi. And this program, it aims to align the initiatives of this DMF with the aspirational district program and aspirational block program to ensure the targeted development in the mining affected areas. And students, for the past few weeks we are seeing that the mining sector is in news, be it for implementing the sustainable development goals, be it for getting green certification, and now be it for various other initiatives so that mining can become a sustainable thing, right? Also, during this event, G. Kishan Reddy has launched a coffee table book 2.0 that showcases the transformative projects that are being funded by the DMF across India. Also, he also inaugurated the DMF exhibition at the Handloom Hart in New Delhi, and the exhibition showcases products and enterprises that are supported by the DMF funds. Next is, if we talk about this DMF fund, this is a non-profit trust. It was established in all mining affected districts of India, that was created under the Mines and the Minerals Act of 1957. It aims to improve the standard of living of people in the mining affected areas through long-term sustainable development initiatives using financial contribution for mining companies. Say for example, this is a mining area and there are these villages, these towns, urban areas, right? So these people that are affected by this mining, right, in order to help them financially and provide them a better living and protect the environment as well as to promote the sustainable development goals are in these areas, right? This was launched, that this district mineral fund was launched. Next is H.D. Kumaraswamy. He is a union minister.
of Steel and Union Minister of Heavy Industries, he inaugurated the new office of MSTC in New Delhi and has launched Upkaran e-portal. First thing first, what is this MSTC? MSTC is your central public sector undertaking, and it comes under the Ministry of State of, right, or it comes under the Ministry of Steel, not Steel, Ministry of Steel, correct. And this new office of this MSTC work more closely with the government ministries and key national organizations. And during this event only, HD Kumaraswamy has also launched Upkaran e-portal, right. This is a major step in digital service offerings of the MSTC. This new portal, it is a digital marketplace that will serve as a bridge between industry and innovation, that will support the MSME, and it will promote transparent, efficient trade practices. This platform e-portal, right, it is designed end-to-end digital platform for various equipment, machinery, inventory management, purchase of machinery as well, right. All these things will be maintained on this portal. And who is the chairman and managing director here of MSTC? Monebender Ghoshal, and headquartered in Kolkata, West Bengal. Next is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has added 7 new agriculture products to the e-NAM portal. What is e-NAM? Electronic National Agriculture Marketplace portal, right? This will enhance the access. It will provide better prices. It will provide the availability, also promote well-being of the farmers. So better price will be provided to the farmers for their crop, right? This will improve the economic conditions of the farmers across India, and also market access as well as the availability of that product will be provided on this e-NAM, that is Electronic National Agriculture Market. And Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, they have added 7 new agriculture products to this e-NAM platform. With this inclusion, with these 7 new inclusion, the total number of commodities that are tradable on this e-NAM platform has increased to 238. So remember this number. These 7 new included, what are they? Sugarcane, marcha rice, katarni rice, right? Lychee, 2 varieties of pan is there, 1 variety of mango is there, correct? Next, and when was this NAM launched? It was launched in 2016, right? This digital platform. Next is DEPWD, that is Department of Empowerment of Persons with Disability. It comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. They have launched a new dedicated online portal for submitting and processing the proposals under the Deen Dayal Divyangan Rehabilitation Scheme and the District Disability Rehabilitation Center Scheme, that will streamline the application process. Under this, if we see, it is in its place a new exclusive instance of this e-Anudan portal has been rolled out. It can be accessed through their new website, and all the data from the previous portal has been successfully migrated to this new platform. If we talk about this DDRS, this is a central sector scheme that provides financial assistance to the voluntary organizations working for the education and rehabilitation of the persons with disabilities. So this new portal has been launched for the disability welfare schemes. All the schemes related to the disabled individuals will be listed here that are launched by the state government or central government. Next, Puducherry, they have signed a memorandum of understanding with Bhashini to advance the multilingual digital governance. I repeat, Bhashini. First of all, you should know what is this Bhashini? Bhasha Interface for India, right? So the Digital India Bhashini Division, that is DIBD, that comes under MEITY. They have signed a memorandum of understanding with the government of Puducherry. Puducherry is a union territory. This will empower the citizens through language technology and foster governance that speaks every language, including Tamil, Malayalam, Telugu, and other regional Indian languages, right? And one thing you see here, that this technology through language technology and foster governance that speaks every language, right? So, and we have seen that Bhashini, what it is doing, it is promoting multilingualism, right, with the help of artificial intelligence. How it is able to do? A large language model is trained on various languages, and that API is connected here with Bhashini's platform so that they can provide the data, and AI chatbots are also there. You can converse there, correct? It is very beneficial. And few days back also, students, we saw that India is focusing on how we can increase from text to video, text to audio generation, text to speech generation. So we are focusing on these things, that how we can grow this also. Next is DOP, that is Department of Post. They have released a coin and stamp to mark 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. I repeat, DOP,
they have released 125 rupees of commemorative coin and a 5 rupees postage stamp to mark 125th birth anniversary of Dr. Shama Prasad Mukherjee during an event that was held at Shri Fort Auditorium in New Delhi. Also, this event also marked the launch of the 2-year national commemoration of Dr. Mukherjee's legacy, and this 125 rupees commemorative coin, it is 99.9% silver and it weighs 40 gram. And these are two sides here, obverse side and reverse side. So the front side is the lion capital of Ashoka with Satyamav Jayate in bilingual denomination, and then reverse is the portrait of Dr. Mukherjee with the year 1901 to 2026. Moving on, next is international affairs students. Prime Minister Narendra Modi was on a nations visit, 5 nations visit we discussed yesterday, to Ghana, Trinidad, Tobago and Argentina, Brazil and Namibia, and this is the second part of it. And during his visits, the important thing was, right, first thing, remember when he visited Brazil, right, leader of both the countries, they set a target to increase the bilateral trade, that is the trade between India and Brazil, from the existing $1.2 billion to $20 billion over the next 5 years. Also, they appreciated the adoption of the United Nations Convention on Cybercrime and pledged to support the signing ceremony, which is scheduled to be held in Hanoi, Vietnam in 2025. Then, here Prime Minister Narendra Modi was also conferred with the Brazil's highest state honor. So take a note of this, this is important. That is the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross. This is the highest civilian honor of the Brazil by Luiz Inácio Lula da Silva, the president of Brazil. Then when he was on a visit to Namibia, there also he was honored with the Namibia's highest state of honor, that is the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. Right, this is the highest civilian honor of the Namibia, and PM Modi, he became the first Indian Prime Minister to receive the honor. Right, and students, yesterday also we discussed that Ghana, Trinidad and Tobago and Argentina, they also granted or they also honored Prime Minister Narendra Modi with their highest civilian awards. This is your homework, you have to name all those highest civilian awards by those 3 countries. Next is UNESCO removes 3 African sites from the World Heritage in Danger list. So remember, World Heritage Committee, they have removed 3 African heritage sites that are located in Madagascar. Let me show you. Madagascar, Egypt and Libya. So these are the 3 sites that have been, these are the 3 African heritage sites that have been removed by the World Heritage Committee from the World Heritage in Danger list. This decision, it was announced during the 47th session of the WHC that was held from 6th of July to 16th of July at the UNESCO headquarters in Paris, France. So remember this also. Correct. This removal from the list, that means that the threats to these sites are resolved. These sites no longer are in danger and the global value here is restored. Right? Take a note of this. Then if we look at some of the sites from Madagascar, which is it? It is rainforest. Rainforest of Etsinanan, that is in Madagascar. Second site from Egypt, it is Abu Mina. Abu Mina, it is from Egypt. And which is the third site? It is Old Town of Ghadames, and it is in Libya. So these are the 3 sites that have been removed by WHC from the World Heritage Sites in Danger. Next, WHIF, that is World Health Innovation Forum, they have joined the BRICS Plus Manufacturing Working Group. This WHIF, it is Andhra Pradesh MedTech Zone based company, and they have been selected as the sole global initiative to join the BRICS Manufacturing Working Group or BRICS Plus Manufacturing Working Group. This is an intergovernmental platform that shapes the manufacturing collaboration and industrial policies among the BRICS nation. That means the nations in the BRICS, right, they will be following these industrial and manufacturing policies. The collaboration they will be seeing here, for them all the structured, all the policies, all the paperwork, all the initiatives, it will be done by, and WHIF will be a part of it when all the decisions will be taken. Correct? And as a member of the BRICS Plus Manufacturing Working Group, here WHIF, it will take the leadership role in joint research and development. Right? So they will be working on research and development also, that how can we increase our process or how we can increase the industrial sector, the manufacturing sector, and specifically in the BRICS nation. Next is economy and business.
Telecom Egypt, they have signed an MOU with Care Expert to launch the national digital healthcare platform, right? So this Telecom Egypt, that is company from Egypt, it is the primary telephone company in Egypt, and they have signed this memorandum of understanding with Care Expert Technologies Private Limited. This is basically a Reliance Jio backed healthcare technology company and the partnership between them, or the MOU between them, has been signed to develop and launch a digital healthcare platform in Egypt. So question can be asked, in order to develop a digital healthcare platform in Egypt, Telecom Egypt from Egypt company, that is an Egyptian company, they have signed an MOU with whom? They have signed an MOU with Indian company, that is Care Expert, that is Reliance Jio backed healthcare technology company. This platform, it will offer fully integrated hospital information management system, electronic medical records, revenue cycle management will be there, and various other revenue cycle tools will also be provided here to monitor the day-to-day expenses. And also it will be leveraging here IoT as well as AI, because we see that AI will be used now in almost everything. Next is JSW Energy. They have joined FTSE for Good Index for strong ESG and sustainability focus. ESG is your environmental social governance practices, and this inclusion, it highlights the JSW's Energy's strong dedication to responsible business conduct and sustainability. Next is T-Hub, that is your technology hub. It is India's leading innovation incubator that has launched the second cohort of their orbit program under Atal Incubation Center T-Hub Space Tech Accelerator to support 17 space tech startups. So in simple terms, this AIC T-Hub Space Tech Accelerator program, right, it was launched, and this is the second cohort of it, that is second, in simple terms, it is the second edition of it, and here the focus will be on space startups, how we can help them, how we can provide the funding that is necessary for them, how we can provide them mentorship in various technologies, and also provide the skills that are needed. Also, this initiative aims to raise over 3 crore rupees in funding and facilities the development of 10 or more intellectual property assets, right? And we know why we are seeing this, because the space sector is booming, students, and we will be studying about a news very soon in this video only, that an individual has been selected, or she's the youngest candidate for the Mars mission that will be going to in 2030, right? So we are focusing on space technologies now. Space is the future, and that is the reason India also allowed 100% FDI in the space sector. Next is Time 100 creator list was released, and Prajakta Kohli became the only Indian to feature in this Times 100 creator list. It highlights the most influential digital voices globally, and Prajakta Kohli has become the only Indian to feature in this list. Then Kay Sent, then Jimmy Donaldson, that is Mr. Beast, right? KB Lame from Italy. These are some individuals who featured on this list. And Prajakta Kohli, she has 7 million YouTube subscribers and 8 million Instagram followers. Next is science and technology. ISRO has conducted the hot test of Gaganyaan SMPS at Mahendragiri in Tamil Nadu. What is this SMPS? It is your service module propulsion system, right? So it is the Gaganyaan service module propulsion system, correct? And it is ISRO that has successfully tested conducted the 2 short duration hot test of this Gaganyaan SMPS. This was tested where? At Mahendragiri, Tamil Nadu, at their ISRO propulsion complex. And this test, it lasts 30 seconds and 100 seconds respectively, and it validated the system's performance, meeting all the test expectations. Moving on, next, SSCPL. What is this? It is your organization, or that is your Starlink Satellite Communication Private Limited, SSCPL, correct? It is owned by Elon Musk only, and they have received the final regulatory approval from InSpace, right? That is the commercial arm of ISRO, and this is to offer commercial satellite broadband services in India. To offer commercial broadband, that is internet, we can say, services in India. And we know Starlink is the organization that is making a constellation of satellites around the earth, through which they will be able to provide satellite internet even in the remote areas. And they partnered with Jio and Airtel in India in order to provide this satellite internet. Next
Next is Elisa Carlson. See students, now is the news that I was talking about. She became the youngest astronaut in training, aiming for the NASA's first human mission to the Mars that will be in 2030. She is 24 years of age, right? And she's an astrobiologist, right? She is from USA, and she has been recognized as one of the strongest aspirants for the NASA's first human mission to space that is expected in 2030 early, right? And she is famously known by her NASA call sign, that is NASA Blueberry, right? Next is important days. National Fish Farmers Day observed on 10th of July, and it is to appreciate the contributions of fish farmers, professional aquaculturists, and stakeholders in underscoring their commitment to the sustainable aquaculture, that is to promote the sustainable practices in the aquaculture. This year it was the 25th edition of this day was observed, and the first time this day was observed in the year 2001. Next is students, that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Identify the campaign launched by the Ministry of Tribal Affairs in June to promote inclusive development and saturation of benefits in tribal regions. So identify the campaign launched by the Ministry of Tribal Affairs. It is Dharti Abba Jan Bhagidari Abhiyan. The campaign rolled out from 15th of June to 30th of June, spanning over 549 tribal dominated districts. And this campaign is the flagship scheme under the Janjatiya Gaurav Varsha, the campaign that celebrates the cultural heritage of tribal communities while ensuring doorstep delivery of key entitlements. Next, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions issued an office memorandum on providing old pension scheme benefits to the central government employees that are subscribed under the UPS, that is Unified Pension Scheme, that has been launched recently. What is the minimum monthly pension amount under the old pension scheme for central government employees with at least 10 years of service? It is 10,000 rupees. Next is name the scheme under which the Ministry of Heavy Industries launched an online application portal on 24th of June to encourage global electric vehicle markers. So name the scheme. Which is that scheme? It is scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India. And this scheme aims to strengthen Make in India and Atmanirbhar Bharat initiative and contribute to India's commitment of achieving net zero carbon emissions by 2070. Next, Government of India has approved the establishment of 417 crore electronic manufacturing cluster under the modified EMC 2.0 scheme in Dash to drive manufacturing and innovation. So what is the location where this electronics manufacturing cluster has been established? Is being established. It is in UP, right? And this newly approved EMC project will be developed by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority, and the proposed cluster will span across 200 acres of the area, and it will attract investment of 2500 crore rupees. Next, pick out the correct statement regarding the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrit. If we look at the options, we have to find the correct statement. So here B and C is right, A is wrong. A is saying Amrit Mission launched on 25th of June 2015 by PM Modi under the Ministry of Rural Development. Is it so? Is the ministry right here? So this scheme was launched on 25th of June in 2015 by PM Modi, not by the Ministry of Rural Development but the Ministry of Housing and Urban Affairs. Next, name the campaign launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs on 26th of June under Swachh Bharat Mission Urban 2.0 to address the monsoon-related health risk in urban areas. So what is the scheme? That is Safai Apnao Bimari Bhagnao initiative. This campaign is being implemented in collaboration with various key central ministries and departments, right? And here the focus will be on tackling health risks that are associated with the clogged drains, stagnant water, garbage hotspots, and many more. Next is mark the correct statement regarding the recent visit of PM Modi to Madhya Pradesh in May 2025. If we look at the options, all these three options are rightly mentioned.
Next, you have to again find the correct statement regarding Narendra Modi's vision. PM Narendra Modi's visit to Sikkim, West Bengal, Bihar, and UP. If we look at the options, you have to find the correct statement here. Here, all these three options rightly mentioned. During the 50th anniversary of Sikkim's statehood event, PM Modi addressed a 50 rupees commemorative coin and a postage stamp. Then he laid the foundation stone for the city gas distribution project in Alipurdur and Cooch Behar of West Bengal, and PM Modi inaugurated new terminal at Patna's Jai Prakash Narayan International Airport during his visit to Bihar. Then next is during a 3-day visit of President of Prague, that is Santiago Pena Palacicosto, to India in June, Union Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar and Ruben Ramirez, the Foreign Minister of Prague, they have signed an MOU to establish what? So the Foreign Minister of both India and Prague, they signed an MOU to establish a joint commission mechanism, right? This will boost the ties across political, economic and cultural spheres. Next, again, correct statement regarding the recent visit of President of Asian Development Bank Masato Kanda's visit to India from 28th to 31st of May. If we look at the option here, Masato Kanda announced a funding of $10 billion over the next 5 years for the development of urban infrastructure across India, including metro network expansion and regional rapid transit system. Absolutely right. Second, the Tripura state government will receive $85.4 million loan from ADB to implement major green infrastructure upgrade, focusing on EV, solar energy and modern infrastructure. That's also right. C, Renew Energy Global PLC, that is Renew Company, they hosted ADB President Masato Kanda and its board chairperson Suman Sinha to discuss the ongoing partnership under $5.3 billion framework agreement. That's also right. So all these three options are rightly mentioned. Next, again, correct statement regarding the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to Jammu and Kashmir on 6th of June. If we look at the options here, option A and C is right, B is wrong. B is saying PM Modi inaugurated India's first cable-stayed rail bridge, Bogibeel Bridge, to serve the nation in the challenging terrain. Is it correct? So during his visit, he inaugurated the Chenab Bridge, right? He inaugurated the Anji Khat Bridge, that is Anji Khat Bridge. That is India's first cable-stayed rail bridge, correct? And this will serve the nation in a challenging terrain. Now option B is also right. Next, name the agreement for which India and Kyrgyzstan has signed and exchanged the instrument of ratification during the 4th India Central Asian Dialogue that was held in Delhi in June 2025. It is Bilateral Investment Treaty. Next, correct statement regarding PM Narendra Modi's visit to Cyprus, Canada and Croatia. If we look at the options here, you have to find the right option. Pick out the correct statement. So here you can see option A is right, that is PM Modi was honored with the Grand Cross of the Order of the Macaronis III, right? This is important, students, so take a note of it. Second, and this is the highest civilian award of Cyprus. Then second is India, Cyprus, Greece. They have launched India, Greece, Cyprus Business and Investment Council to promote the trilateral cooperation between these three countries. This is also right. And third option is also rightly mentioned. Next, President of India Draupadi Murmu visited Uttarakhand from 19 to 21st of June. Pick out the correct statement here. If we look at the options, which is the right option here. So, President inaugurated 200-seat amphitheatre and laid the foundation stone for new staff quarters, tables and barracks at Rashtrapati Niketan. Right. Second, she laid the foundation stone for Rashtrapati Udyan, a 132-acre sustainable public green at Rashtrapati Niketan. That's also right. C, she also released a postal stamp to mark 125 years of Raj Bhavan Nainital and unveiled a coffee table book during the event in Dehradun, Uttarakhand. This is also right. So all the three options A, B, C are rightly mentioned. Next, students, is our homework section. First question is, tell me Mukhya Mantri Pratigya scheme. It was launched to support the youth internships and it was launched by which state? Second question, students, tell me recently Jan Suraksha Santrupti Abhiyan. This was launched by which state? Third question, tell me recently which city in India has launched the India's first digital house address QR code that will promote digitization of the address. Then fourth question, tell me recently
which bank, or tell me recent, who has been appointed as the new raw chief. And fifth question, tell me who has been appointed as the executive director of SEBI recently. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11th ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं डेली करंट अफेयर्स की, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जी किशन रेड्डी जी की, जिन्होंने लॉन्च किया एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम को। देन एचडी कुमार स्वामी ने लॉन्च किया न्यू ऑफिस ऑफ एमएसटीसी, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, एंड उपकारण ई पोर्टल को लॉन्च किया। देन 7 नए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया टू ई नाम पोर्टल, एंड डीईपीडब्ल्यूडी इनके द्वारा लॉन्च किया एक नया पोर्टल फॉर डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम। ऑल दीज थिंग्स एंड मेनी मोर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। पंजाब ने लीड किया इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है आपका परख। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ, जहां पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। एंड यहाँ पे पंजाब एमर्ज करके आया है बेस्ट परफॉर्मर फॉर क्लास 3rd, क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए। अगर यहीं पे हम देखें, इस असेसमेंट को कंडक्ट किसके द्वारा करा गया? एनसीईआरटी के द्वारा करा गया। देन यहीं पे अगर हम देखें, क्लास 3 को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, क्लास 6 तक प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, एंड क्लास 9 से हम मिडल स्टेज कहते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस में अगर हम देखें, तो क्लास 3 में पंजाब ने सिक्योर की टॉप पोजीशन, क्लास 6 में पंजाब एंड केरला ने टॉप पोजीशन सिक्योर करी, एंड क्लास 9th में भी पंजाब ने टॉप पोजीशन सिक्योर करी। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पर बेसिकली ये लाए गए हैं कि हम कितनी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है बच्चों की, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्लास 3rd में इन चीज़ों के ऊपर, क्लास 6 में इन चीज़ों के ऊपर, क्लास 9th में इन चीज़ों के ऊपर फोकस दिया गया, जहाँ पर हमने देखा कहाँ पे बच्चे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी किशन रेड्डी जी, इनके द्वारा एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये क्या है? डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, तो जी किशन रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस के हैं, इनके द्वारा गाइडलाइंस लॉन्च की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की फॉर दिस प्रोग्राम अंडर दिस नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड इस इनिशिएटिव के अंडर हम देखेंगे कि कैसे जो माइनिंग इफेक्टिव एरियाज होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के, उनको इम्प्रूव करके वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये एक माइनिंग साइट है, तो इसके आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ्स को बेटर करने का काम किया जाएगा। एंड माइनिंग से काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट, तो उसको भी हम टैकल कर सकें, इनके ऊपर यहाँ पे गाइडलाइंस लॉन्च की गई। इसी के अलावा देखेंगे तो जी किशन रेड्डी ने कॉफी बुक टेबल 2.0 को लॉन्च किया। देन इन्होंने ही डीएमएफ एग्जीबिशन को लॉन्च किया एट द हैंडलूम हार्ट इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया नया ऑफिस ऑफ एमएसटीसी, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। एमएसटीसी ये है क्या? बेसिकली ये एमएसटीसी आपकी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। एंड ये जो नया ऑफिस है, ये मोर क्लोजली वर्क करेगा विद द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इट इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू ब्लॉस्टर देयर पार्टिसिपेशन इन प्लेटफॉर्म्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट अक्रॉस द कंट्री एंड मैनी मोर। एंड यहीं पे फिर हम देखेंगे एचडी कुमार स्वामी जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया उपकारण ई पोर्टल को।
उपकरण ई पोर्टल को, राइट, जो कि एक मेजर स्टेप है इन डिजिटल सर्विस जो कि ऑफर करता है एमएसटीसी को ऑफ इन न्यू दिल्ली, राइट। यहीं पे हम देखेंगे कि हम कैसे एमएसटीपी की मदद से इस ऑफिस से हम एमएसएमईज को ग्रो कर सकते हैं, एमएसएमईज को प्रमोट कर सकते हैं, राइट, उनका जो ट्रेड है वो फ्लरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, और एमएसटीसी की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या होगी, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने 7 नए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऐड किया टू ई नाम प्लेटफॉर्म। ई नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म। तो 7 नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया और अब टोटल हो गया 238 प्रोडक्ट्स एट दिस प्लेटफॉर्म। इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम कह सकते हैं ये एक मार्केट एक्सेस है जहाँ पे फार्मर्स को राइट प्राइस मिलता है अपनी क्रॉप के लिए, राइट, अवेलेबिलिटी का पता लगता है, कैसे वो अपने फार्मर्स की जो प्राइस है उनको मार्क कर सकते हैं, पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड देखें ये जो 7 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च किए गए हैं इसमें आपकी राइस की वैरायटी है, 2 नई राइस की वैरायटी, शुगर केन, देन इलायची, मैंगो की एक वैरायटी है, पान की 2 वैरायटी यहाँ पे ऐड की गई है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं DEPWD जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। इन्होंने लॉन्च किया है एक नया डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल जो फॉर लॉन्च किया गया पोर्टल किस लिए, फॉर सबमिटिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रपोजल्स अंडर दीन दयाल दिव्यांगन रिहेबिलिटेशन स्कीम एंड डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्कीम टू स्ट्रीमलाइन द एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब ये लॉन्च किया गया नया पोर्टल ताकि इनके अंडर जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए इजी हो सके अपनी इन वेबसाइट्स पे इन सर्विसेज के लिए, इन इनिशिएटिव्स के लिए अप्लाई करना, राइट। इससे होगा क्या, ईजनेस बढ़ जाएगी एंड ज़्यादा लोगों तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, राइट, डिसेबिलिटी के पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको यहाँ पे सहूलियत होगी इसको यूज़ करने में, राइट। ऑल्सो ये जो DDRS दीन दयाल दिव्यांगन रिहेबिलिटेशन स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं फॉर द एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं पुडुचेरी, इन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भाषिनी के साथ ताकि मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर फोकस दिया जा सके। मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु एंड अदर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जा सके। भाषिनी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ला सकते हैं, इसीलिए डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए DIBD, ये क्या है DIBD, भाषिनी डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन MEITY के अंडर आता है। इन्होंने ये MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी के साथ ताकि सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके थ्रू लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड फॉस्टर गवर्नेंस दैट स्पीक्स एवरी लैंग्वेज। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने रिलीज किया है कॉइन एंड अ स्टैम्प टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की एंड इसके लिए यहाँ पर एक कॉइन 125 रुपए का कॉइन एंड एक 5 रुपए का पोस्टेज स्टैंप को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये जो 125 रुपए का कॉइन है ये 99.99% सिल्वर रहेगा, 40 ग्राम का इसका वेट रहेगा। यहीं पे अगर हम देखें इस अगर कॉइन की बात करें, इसके स्टार्टिंग के कॉइन के ऊपर सत्यमेव जयते लिखा है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका विद सत्यमेव जयते एंड पीछे की तरफ पोर्ट्रेट है डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 5 नेशन के विजिट पे थे, गाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना एंड ब्राजील एंड नामीबिया। इन तीनों का तो हम कल देख चुके थे, आज हम देखेंगे ब्राजील एंड नामीबिया का। इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले याद रखेंगे, जब ये ब्राजील में विजिट पे थे दोनों कंट्रीज के लीडर ने यहाँ पे टारगेट सेट किया कि दोनों कंट्रीज के बीच में दैट इज इंडिया एंड ब्राजील के बीच में जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, हम उसको 1.2 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 20 बिलियन डॉलर कर सके इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर इसी के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्राजील के हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया जो कि है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, राइट, जिसको सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। एंड देन जब ये नामीबिया में थे वहां पे भी इनको हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ नामीबिया है, वो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस, राइट। इस ऑर्डर से यहाँ पे सम्मानित किया गया, करेक्ट। तो
तीन हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इन तीनों में से इन तीनों की स्टेट के भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसका भी आप मुझे होमवर्क में नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन से तीन वो ऑनर हैं जिनसे सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसी विजिट के दौरान। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनेस्को। इन्होंने रिमूव की 3 अफ्रीकन साइट्स को फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। ये बेसिकली इन 3 हेरिटेज साइट्स को यहाँ पे इसलिए रखा गया था क्योंकि ये डेंजर में थी एंड इनको रिस्टोरेशन की जरूरत थी। एंड अब जब वो डेंजर खत्म हो गया है तो अब इनको इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट से हटा दिया गया ऑफ यूनेस्को। किसके द्वारा हटाया गया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा हटाया गया है, राइट। एंड ये जो डिसीजन था 47वां सेशन था WHC का, 6 जुलाई से 16 जुलाई तक हुआ, जहां पर इसको रिमूव किया गया एट यूनेस्को हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। मेडागास्कर, देन इजिप्ट एंड लीबिया। अगर मेडागास्कर की बात करें, मेडागास्कर से है रेन फॉरेस्ट, ये नोट करेंगे, साथ साथ लिखो, राइट। रेन फॉरेस्ट ऑफ एट सी नानन, ये मेडागास्कर में, इसको रिमूव किया गया। दूसरा आ जाता है आबू मीना, ये इजिप्ट में है। एंड तीसरा है ओल्ड टाउन ऑफ गादामेस। इन तीनों साइट को, राइट, ये अफ्रीकन हेरिटेज साइट है, इन तीनों को यहां रिमूव कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की लिस्ट से। फिर आ जाते हैं WHIF, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ इनोवेशन फोरम। इन्होंने ब्रिक्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग ग्रुप को ज्वाइन कर दिया है एंड नाउ बीइंग अ लीडर हेयर, नाउ बीइंग अ बेसिकली पार्ट ऑफ दिस। अब इनके पास कमांड होगी कि जो वर्ल्ड में, या फिर हम बोले जो ब्रिक्स नेशंस हैं, राइट, इसमें जो कोलैबोरेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो इनके थ्रू बनाई जाएंगी, इनकी मदद से बनाई जाएंगी, राइट। एंड ये एक लीडरशिप रोल यहाँ पे संभालेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस देने के लिए, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराई जा सके इन दिस सेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। टेलीकॉम इजिप्ट, इन्होंने एक MOU साइन किया कार्य एक्सपर्ट के साथ, जो कि एक रिलायंस जियो बैक्ड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। एंड टेलीकॉम इजिप्ट ये बेसिकली आपका एक इजिप्ट का वन ऑफ द प्राइमरी टेलीफोन कंपनी है। इन दिनों के बीच में यहाँ पे ये MOU साइन हुआ ताकि एक नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, जहाँ पे हेल्थ केयर की रिलेटेड सारा डाटा मेंटेन किया जा सके एंड वहाँ से लोगों को बेटर सर्विसेज, मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड किया जा सके। ये क्लाउड होस्टेड रहेगा, मतलब क्लाउड पे सारा डाटा इनका होस्ट किया जाएगा, सारा सर्वर एंड एवरीथिंग। एंड इससे जो इजिप्ट का विजन है 2030 का कि हम सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें इन आर इकोनॉमी, डिजिटली उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके विद द हेल्प ऑफ AI, IoT, क्लाउड सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर JSW एनर्जी, इन्होंने ज्वाइन किया FTSE फॉर गुड इंडेक्स को फॉर स्ट्रॉन्ग ESG एंड सस्टेनेबिलिटी फोकस। आई रिपीट, JSW एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया इंक्लूजन इन द FTSE फॉर गुड इंडेक्स सीरीज, जो कि एक डिजाइन किया गया है इन सच अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग ESG प्रैक्टिसेस को, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर एंड गवर्नेंस को लेके वो बेटर प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर रही हैं एंड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, राइट। तो JSW को यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया इस इंडेक्स को फॉर स्ट्रॉन्ग ESG एंड सस्टेनेबिलिटी फोकस। फिर आ जाते हैं टी हब क्या है? टेक्नोलॉजी हब। ये इंडिया का लीडिंग इनोवेशन इंक्यूबेटर है, जिसका भी हमें सेकंड कोहॉर्ट, मतलब सेकंड एडिशन देखने को मिला इसका, ऑफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर टी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर का, जो सपोर्ट करता है 17 स्पेस टेक स्टार्टअप्स को। मतलब फोकस रहेगा यहाँ पे हम स्पेस के ऊपर। इवन आने वाले हम वीडियो में देखेंगे अभी कि एक 24 साल की वो यंगेस्ट एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बनी है, जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है कि नासा का जो 2030 में मार्स पे मिशन जाएगा उसमें ये एक एस्ट्रोनॉट होंगी, राइट। तो बेसिकली अब क्या है, स्पेस के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, स्पेस इज द फ्यूचर, राइट। तो इंडिया ने भी, अगर आपको याद हो, 100% FDI अलाउ कर दिया था स्पेस सेक्टर में। रीजन भी यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट देख सके स्पेस सेक्टर में। तो टी हब के द्वारा सेकंड कोहॉर्ट लॉन्च किया गया है AIC टी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम का, जहां पे 17 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड इस इनिशिएटिव के अंडर 3 करोड़ रुपए यहाँ पे फंडिंग में रेज करने की बात की जाएगी, ताकि 10 से भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स को बनाया जा सके।
नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आते हैं। प्रजक्ता कोहली ये एक लौती इंडियन क्रिएटर बनी है जो कि टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट पे फीचर हुई है। अगर हम देखें इनके इंस्टाग्राम पर हैं 8 मिलियन कुछ फॉलोअर्स एंड यूट्यूब पर आ जाते हैं कुछ 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, राइट। एंड ये एक लौती इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि टाइम मैगजीन की टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में फीचर की गई। मिस्टर बीस्ट यहाँ पर रहे, राइट। खैबी लेम जो कि इटली से हैं वो इस लिस्ट में मेंशन किए गए एंड मैनी मोर। टाइम्स मैगजीन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड सैम जैकॉब्स यहाँ पे एडिटर इन चीफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक पर। इसरो ने कंडक्ट किया हॉट टेस्ट ऑफ गगनयान SMPS एट महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु। SMPS क्या है? सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम, राइट। सो इसरो के द्वारा यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, या फिर हम बोले सक्सेसफुली हॉट टेस्ट किए गए, 2 करे गए हैं ऑफ SMPS। कहाँ पर? एट द इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। पहला टेस्ट 30 सेकेंड तक लास्ट किया, दूसरा 100 सेकेंड तक। एंड जो भी प्री टेस्ट एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे वो फुलफिल होती हुई दिखी है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं SSCPL क्या है? ये है आपका स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इलॉन मस्क के द्वारा इसको ओन किया जाता है। इनको इन स्पेस का अप्रूवल मिल गया जो कि कमर्शियल नाम है इसरो का, फॉर द कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। मतलब ये कमर्शियल ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करा सकते हैं अब। एंड इवन अगर आपको याद हो तो स्टारलिंक के द्वारा किन 2 कंपनीज के साथ टाई अप किया था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन इन इंडिया? तो वो थी जियो एंड एयरटेल। एंड स्टारलिंक कर क्या रहा है? अर्थ के चारों तरफ ये एक कॉन्स्टिलेशन बना रहा है सैटेलाइट्स का, जिससे इवन इन द रिमोट एरियाज यहाँ पे हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिसा कार्सन। स्टूडेंट्स यही वो व्यक्ति हैं, यही वो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं यूएसए से जिनकी मैं बात कर रहा था। ये यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग है जिनका एम है नासा का पहला ह्यूमन मिशन टू मार्स जो कि 2030 में एक्सपेक्टेड है, राइट। एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे मानी जा रही हैं इस मिशन के लिए। इवन इनको नासा ब्लूबेरी के नाम से ये काफ़ी फेमस है नासा में। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिशरीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एक्वाकल्चर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कराने के लिए एंड एक्वाकल्चर को सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने इसका 25वां एडिशन ऑब्जर्व किया एंड 2001 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो कि एक फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी 9वीं एनिवर्सरी भी हमने सेलिब्रेट करी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव इज नॉट इंटीग्रेटेड विद दिस स्कीम। तो अगर यहाँ पर हम देखें इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड नहीं है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इससे इंटीग्रेटेड नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कैंपेन जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इन जून टू प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सैचुरेशन ऑफ बेनिफिट्स इन ट्राइबल रीजन्स। तो आइडेंटिफाई द कैंपेन, कौन सा कैंपेन है? वो है धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। 15 से 30 जून तक ये कैंपेन रोल आउट किया गया था। एंड ये कैंपेन सेलिब्रेट करता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि डोर स्टेप डिलीवरीज तक उनको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, इन्होंने इशू किया एक ऑफिस मेमोरेंडम ऑन प्रोवाइडिंग ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि सब्सक्राइब कर चुके हैं टू यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये लेटेस्ट है। व्हाट इज द मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट अंडर द ओपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनकी 10 साल की सर्विस हो चुकी है? तो मिनिमम पेंशन होगी 10,000 रुपये। नेक्स्ट नेम द स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने लॉन्च किया एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 24 जून को टू एनकरेज ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। तो पूछा जा रहा है नेम दैट स्कीम जो लॉन्च की गई वो है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। इससे इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ती हुई दिखेगी जो कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 417 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अंडर द मॉडिफाइड EMC 2.0 स्कीम। ये इस्टेब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इससे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। 200 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके द्वारा बनाया जा रहा है। एंड यहाँ पे हम 2500 से भी ज़्यादा
2500 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि अमृत मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो नहीं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड यही चीज़ याद रखेंगे, पीएम मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, तो अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, नेम द कैंपेन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया 26 जून को अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 टू एड्रेस द मॉनसून रिलेटेड हेल्थ रिस्क इन द अर्बन एरियाज। तो नेम दैट कैंपेन वो है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, राइट। एंड मॉस्किटोज से बचने के लिए, क्योंकि मॉस्किटोज से हम देखते हैं आज के टाइम पे गंदगी में फैलते हैं, बीमारियां होती हैं, एक रीज़न ये है। दूसरा, सफाई बहुत होनी ज़रूरी है, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, एनवायरनमेंट साफ रहना चाहिए, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मध्य प्रदेश। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमें सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड यूपी। सारे ऑप्शन सही है, यहाँ पे याद रखेंगे, ये तीनों सही हैं। ड्यूरिंग हिज 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड, पीएम मोदी ने एक 50 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया एंड एक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया। तो तीनों ऑप्शन यहाँ सही हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ 3-day स्टेट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पराग, ये यहाँ पे विजिट थे, इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो भी इंडिया में थे। तो अभी रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड रूबेन रेमिरेज, ये आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं पराग के, इन दोनों के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ, जहाँ पर हमने क्या इस्टेब्लिश करने की बात करी, एक जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की बात करी, जिससे जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज जो है वो इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मसातो कांडा, ये भी इंडिया के विजिट पे थे 28 से 31 मई तक। अगर यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने अनाउंस किया $10 बिलियन की फंडिंग आने वाले 10 साल में, ताकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके, जैसे मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर एंड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के ऊपर। तो ऑप्शन ए सही। दूसरा है, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेंगे $85.4 मिलियन लोन फ्रॉम एडीबी टू इम्प्लीमेंट अ मेजर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड फोकसिंग ऑन ईवी, सोलर व्हीकल्स, सोलर एनर्जी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ऑप्शन बी भी सही एंड सी भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रीसेंट विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 6 जून। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहे हैं पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जो कि है बोगीबील ब्रिज टू सर्व द नेशन इन द चैलेंजिंग टेरेन। तो नहीं, इनके द्वारा जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो क्या लॉन्च किया गया है, अंजी खड़ ब्रिज, अंजी खड़ ब्रिज। ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज रहेगा जो कि इंडिया को सर्व करेगा इन अ चैलेंजिंग टेरेन। ठीक है, बॉगीबील ब्रिज नहीं है ये। नेक्स्ट, नेम द अग्रीमेंट फॉर विच इंडिया एंड किर्गिस्तान, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया एंड एक्सचेंज किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ड्यूरिंग द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो कि दिल्ली में हुआ जून में। तो नेम दैट अग्रीमेंट वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल विजिट टू साइरस, कनाडा एंड क्रोशिया। अगर ऑप्शन देखें यहाँ पर तो आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, ये भी उत्तराखंड के विजिट पे थी 19 से 21 जून तक। सही स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। ए कह रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने इनॉग्रेट किया 200 सीट का एमपी थिएटर एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू स्टाफ क्वार्टर, स्टेबल्स एंड बैरक्स एट राष्ट्रपति निकेतन। बिल्कुल सही, राइट। राष्ट्रपति निकेतन है कहाँ पर, उत्तराखंड में। देन प्रेसिडेंट मुर्मू ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर राष्ट्रपति उद्यान, ये कहाँ पर है, जो कि 132 एकड़ का सस्टेनेबल पब्लिक गार्डन रहेगा राष्ट्रपति निकेतन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि राष्ट्रपति उद्यान है कहाँ पर, ये भी उत्तराखंड में है। एंड ऑप्शन सी भी यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिलता है। तो तीनों ऑप्शन ए बी सी आपके बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी मुख्य मंत्री प्रतिज्ञा स्कीम, it was launched to support the youth internships and it was launched by which state? Second question students, tell me recently Jan Suraksha Santrupti Abhiyan, this was launched by which state? Third question, tell me recently
Which city in India has launched the India's first digital house address QR code that will promote digitization of the address? Then fourth question, tell me recently which bank, or tell me recent who has been appointed as the new raw chief. And fifth question, tell me who has been appointed as the executive director of SEBI recently. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.